start with chapter number 17, that is natural disaster. Right? So what are natural disaster? Disaster that occurs naturally without any कोई मतलब कोई आपको साइन वगैरह नहीं पता होता. So nature has provided life on earth. Nature is the only creator of different things. So, but it also destroyer of these things. Natural calamities are these destroyers. इनको हम disaster कहते हैं. Like we have many disaster, flood, drought, earthquake, cyclone, tsunami, landslide, forest fire. They cause great loss of life and property. Now, earthquake. Our earth crust is based on tectonic plates. These plates are in constant motion as they are on the earth mantle, which is made of molten rock. Whenever these plates collide with each other, जैसे ही ये प्लेट्स क्या कर रहे हैं, कोलाइड कर रही है, मेजर और माइनर अर्थक्वेक अकर. अर्थक्वेक आर वेरी रेगुलर एक्टिविटीज. मोस्ट ऑफ द टाइम द अर्थक्वेक आर सो माइनर कि वो आपको फेल्ट भी नहीं होते. हाउएवर व्हेन द कोलिजन आर ऑफ ग्रेटर इंटेंसिटी, अर्थक्वेक आर फेल्ट वेरी स्ट्रांगली. द पॉइंट वेयर द क्वेक स्टार्ट, इसको हम क्या कहते हैं, फोकस. ठीक है. और जो मेन पॉइंट होता है सरफेस का, जहाँ पे उसको ट्रांसफर किया जाता है, उसको हम एपिसेंटर कहते हैं. इट इज द प्लेस जहाँ पे सबसे ज्यादा डैमेज होता है. ठीक है. जैसे आपका ये अर्थक्वेक आया, ठीक है, आ रहा है यहाँ पे से, ये क्या होता है, एपिसेंटर होता है जहाँ पे सबसे ज्यादा डैमेज होता है. इधर क्या होगा, थोड़ा कम डैमेज होगा, लेकिन इस वाले पार्ट में जो डैमेज होगा वो ज्यादा होगा, ज्यादा हाई इंटेंसिटी का होगा. एंड अर्थक्वेक इन जापान 2011, ये क्या था, हॉरिफिक एग्जाम्पल था. राइट. सो लेट्स स्टडी. सेस्मोग्राफ इज यूज फॉर मेजरिंग एंड रिकॉर्डिंग अर्थक्वेक. साइंटिस्ट जो है वो रिचर स्केल का यूज करते हैं for measuring the intensity of the earthquake. Now precaution. Proper techniques of construction should be followed while constructing the building. आपको एक structural safety रखनी है buildings की, earthquake की. Right? During earthquake, one should not stand near the outer wall of window. If it is not possible to get out of the building, one must cover under heavy furniture. भाई आप क्या करो, कोई heavy furniture के नीचे अपने को cover. Regular drills to aware people of do's and don'ts must be carried out in schools and offices to make the safety measure. There can be equally devastating aftershocks of the earthquake. So one should not enter the building immediately. जैसी earthquake हुआ है, आपको एकदम से enter नहीं करना. So volcanoes. When the magma under the earth crust spills over the surface, it is called volcanic eruption. The molten magma under the pressure of heat, what it do? It keeps thrusting the crust. Some lithosphere कहता. When it gets weaker surface, it makes opening there, and the magma that comes out of the earth is called lava. Huge amount of ash, molten rocks in the form of lava and gases erupt from the volcano through one opening called vent. एक वेंट होती है, इसको हम ओपनिंग कहते हैं, जहाँ से आपका लावा बाहर आता है. सो द बाउल शेप्ड हॉलो फॉर्म्ड होता है टॉप, उसे हम क्या कहते हैं, क्रिएटर कहते हैं. सो लेट्स स्टडी सम प्रिकॉशन नाउ. The unknown sites of recent volcano activity should be avoided for habitation. The signs of eruption is visible much before an actual volcanic eruption. People should immediately evacuate an area surrounding the volcano. There should be proper evacuation plan for a people in case of volcanic eruption, and people should be made aware of the risk and explain the measures to be followed during the evacuation process. Right? So, floods generally occur when there is a heavy rainfall, जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है. During heavy rains, rivers overflow, flood surrounding areas. Excess rain and deforestation results in soil. इनकी वजह से क्या होता है? Soil erosion होता है. So, flood cause excessive loss of life and property. Houses are washed away, cattle die in large number, and crops are destroyed. So, because of chronic snake bites, fever, and infections after the flood, destruction of crop, occurrence of famine condition, loss of job, migration of people to cities in search of job, the farmers, they are the major victims. In Bihar, West Bengal and northeastern state, ये बहुत ज़्यादा सफ़र करती है due to heavy floods, due to overflowing of river like Ganga and Brahmaputra. Drought. Excess rainfall causes flood. While अगर scarcity हो जाए water की, उसको हम क्या कहते हैं? Drought कहते हैं. एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन. और जो फार्मर है वो किस पे डिपेंड करते हैं? मॉनसूनल रेन, जून टू सितंबर. व्हाट दे प्रोवाइड? वाटर फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स. मॉनसून इन इंडिया इज वेरी erratic. Sometimes they are early at other times and they are late. So what are the precautions? Proper reservoirs and water tanks need to be built and maintained to conserve water. Right?
Rainwater harvesting measures need to be implemented strictly in every household and building. Recycling of wastewater is good. Water storage structures like dams should be built. Now cyclones, they occur due to low pressure system towards the wind and the coastal belts in India are prone to cyclone. जितनी भी आपकी coastal belts है, वहाँ पे आपने देखा होगा mostly वो areas ज़्यादा cyclone prone areas होते हैं, वहाँ पे ज़्यादा cyclone आता है. Near the coastal area, water level rises suddenly and lashes into a land destroying building. Strong winds with speed of over 100 km per hour or more up to trees. आपने देखा होगा टेलीफोन और जो इलेक्ट्रिक पोल्स होते हैं दे डिस्ट्रॉय व्हाटएवर कम्स इन देयर वे. साइक्लोन्स आर मोर फ्रीक्वेंट इन कोस्टल गुजरात, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश. ये एरियाज होते हैं दे कॉज सीवियर डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी. Precaution. Early warning system should be installed in the cyclone prone area. People should move to safer places. जब साइक्लोन वगैरह आते हैं तो आप सेफर प्लेसेस पे मूव करें. And tree plantation in such area should be promoted as it helps in countering cyclones. आप क्या कर सकते हो? साइक्लोन्स को काउंटर कर सकते हो. Right? This is all in this chapter. Hope you understood each and everything. Now we will meet in the next class. Thank you.